Hello everyone. Let's see finance and its source. Financial management has a broad covered subject to finance and its source of finance. First we see finance. What is finance? Money used to purchase things the business needs or want. That is finance. Let's see what is the source of finance. What is source of finance? It is a method to getting hold of the money you need to secure the finance are the most explored areas, especially for entrepreneurs about to start a new business. It is perhaps the thoughts part of all the efforts. It is perhaps the toughest part of the all efforts. इसका मतलब वो होता है फाइनेंस जहाँ से हमें धन की प्राप्ति या जो कंपनी को चलाने के लिए हमें धन चाहिए होता है। जिस भी सोर्स से हमें पैसे मिलते हैं उसको कहा जाता है सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसमें आपके बोरोइंग और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बोरोइंग या उधार या ऋण जहाँ से आप लेते हैं सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो देखते हैं व्हाट इज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। व्हाट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। Let we see classification of source of finance. There are various sources of finance classified on the basis of, तो मेजरली हम देखते हैं 3 बेस वेरियस जिसके ऊपर सोर्स को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है टाइम ऑफ पीरियड, सेकंड ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड लास्ट इज सोर्स ऑफ जनरेशन। विल वी कवर both first, second and third. Let's see one by one. First we see according to time period. Source of finance, a business are classified based on the time period for which the money is required. Time period are commonly classified into following 3. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमें पैसे फंड मिलते हैं वो किस बेसिस पे मिलते हैं। वो 3 तरह के जो बेसिस होते हैं उन पे पैसे मिलते हैं। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, second is medium term source of finance, and third or last is short term source of finance. Let's see one by one short, long and medium. First we see long term source of finance. It considers share capital or equity share, performance capital or performance shares, retained earning or internal accruals, debenture and bonds, term loans for financial institutes and governments and commercial banks. Now next is venture funding, and next is asset securitization, and last international financing by way of euro uses, foreign currencies, loans, ADR and ZDR. So that is the source of long term financing, and let's see medium term source of financing. Medium term source of financing is preference capital or performance shares, preference capital and preference shares, debenture and bonds, medium term loan from financial institutes, governments and commercial banks, and lease finance and also hard purchase financing. That is all the medium term source of finance. Now let's see short term source of finance. Short term source of finance is trade credit, short term loans like working capital loans from commercial banks, fixed deposit for a period of a 1 less year, मतलब 1 साल से जो कम होते हैं वो भी शॉर्ट टर्म में कंसिडर किए जाते हैं। एडवांस रिसीव्ड फॉर कस्टमर, क्रेडिटर्स, पेएबल, फैक्ट्री सर्विसेज एंड ऑल्सो बिल डिस्काउंटिंग। ये सारे जो है मीडियम सोर्स में आप चाहें तो एक 1 by 1 नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो सेकंड है अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एंड कंट्रोल। लेट्स सी सोर्स ऑफ फाइनेंस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ओनर एंड कंट्रोल ओवर द बिजनेस। These 2 parameters are an important consideration while selecting a source of finance for the business. On the basis ownership and control source of finance classified into 2 forms. First is on capital
एंड सेकेंड इज बोरोड कैपिटल, मतलब आपके पास जो पैसे हैं उसके हिसाब से दो तरह से पैसे आप ले सकते हैं। पहला खुद के पास जो पैसे होते हैं और सेकंड इज जो उधार पे लिए जाते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं ओन कैपिटल। ओन कैपिटल मीन्स इक्विटी कैपिटल, प्रीफरेंस कैपिटल, रिटेन अर्निंग, कन्वर्टेबल डिबेंचर, वेंचर फंड और प्राइवेट इक्विटी। These are the owned capital. And second is borrowed capital. That's mean financial institutes, commercial banks or general public in case of debenture. These are the borrowed capital. So we see second according to ownership and control. Now let's see last classification based on according to source of generation. आपकी जो फंड है इंटरनल से आपने जो चीज़ें प्रोवाइड की उससे आपको फंड मिल रहा है या रेज हो रहा है, या सेकेंड आउटर जो सोर्सेज है, तो दैट इज़ द क्राइटेरिया फॉर डिवाइडिंग टू पार्ट ऑफ शेयर्स according of the source of generation. Source of finance are classified into two types. First is internal sources and second in external sources. Now let's see internal. What is internal sources? Internal sources means retained profits, reduction or controlling of working capital, sale of assets. That is internal sources. And now let's see external sources. External sources mean shares, debenture, public deposit and loan. So these are the important features of financial management to classify the source of financing and also what is finance. So thank you very much. If you like this video, please subscribe and